Good afternoon, everyone. If you all are comfortable, please turn on your cameras. We'll be beginning now. Okay. I am Harshita Adhikari, President of the Satyavati Consulting Group. I warmly welcome you all to today's webinar titled Inside the Case. We're honored to have Mr. Akash Tripathi, General Manager at Priston Care, as our esteemed speaker for the day. With a background in engineering from BITS Pilani and an MBA from Narsi Monji Institute of Management Studies, so brings in a wealth of knowledge and experience to shed lights on the significance of case studies today. We are delighted to have you with us, sir. Thanks a lot, guys. Thanks a lot, Harshita, for this wonderful introduction. So, just a quick check. Am I audible to everyone? Am I visible to everyone? Yes, sir. Okay, great. So, I'll just present my screen and then we can start. Okay. So, is my screen visible to everyone? Yes, sir. Okay, guys, thanks a lot for coming in on Sunday afternoon. And it would be really appreciable if you guys make this session a bit more interactive. So I want that you have come here on a Saturday afternoon. I want everyone to be really, really interactive with us, so that I can add value to this 1 hour that you have associated given on a Saturday afternoon. So I will keep this short. I want that out of a 60-minute interaction, I want to keep like 40 minutes of for 40 minutes of discussion, 40 minutes of giving you ideas, and the rest 20 minutes I want to open up for discussions. And I will keep it informal. हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे ताकि एक our objective is to keep this as informal as possible. Okay, guys. So what I would suggest is, agar anyone is having any doubt, can stop me in the middle and ask me, and rest after this 40 minutes of sessions, like 110, around 150, I will try to end it, and in between I will be asking a lot of feedbacks from you. So I really hope that we can make this as interactive possible. Starting with a quick intro about myself. So I've been working at Pristine Care for almost last 4 years now, and it has been a really, really wonderful journey. So Pristine Care is one of the fastest growing startup in the medical and healthcare sector. We are based out of Gurgaon and we have a pan India presence now. Okay, and I have done my engineering from BITS Planning campus, and after that I went on to do my MBA. One thing about myself is I have concentrated a lot on case studies during my MBA times. I have won various case study competitions like HUL Lime, Asian Paint Canvas, Pepsi Changed the Game, and various other competitions. And one I also found the interesting part is I found my first job after MBA through a case study competition one day. And not just that, I have mentored a lot of people in solving these case study competitions. So this is something which I have done till now. Second part is like which I would focus my discussion is on internships. So you are studying as of now, and you would want to find a lot about like what kind of internships you should want to do, why should you even do an internship in the first place, and how to find a good internship. So let's keep it interactive, guys. So what there are two topics that I want to focus on: case study competition and finding internships. So out of these two topics, which topic should I focus on more? Internship part or case study part? So that Sir. yes. If you guys can write it on the message box, like which topic you would find to be more attractive. Case study, okay.
More answers, guys. Let's make it interactive. Internship. Okay, 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 okay. Internships. Okay, Charul is saying internship. Lakshika is saying internship. Hardik internship. Okay, Rakhi is internship. Adit wants to focus on case study. Rishabh wants to focus on case studies. Okay, Aniket wants internship. Okay, so we have a clear bias towards internships, and without any doubt, I understand that internship would be a critical part of your uh, curriculum in your college. So let's focus more on internship and keep a good focus on the case study part also, so that we have I am able to add value to this 1 hour. Okay, and if my audience wants that they want to focus on internship, let's be it. Okay, so we will quickly start with the uh, internship part then. So let's move on to the internship part. Okay, great. So guys, one quick question to all of you. Like, how many of you have done a internship in a corporate kind of an environment, in which excluding the work from home kind of internship, a proper corporate internship where you went to the job and did your internship? Yes or no on the message box. How many of you have done a internship? Okay, great. Saksham, no. Okay, 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 okay. I have done. No, 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 no. Okay, okay, great. Mhm. Okay, more answer, guys. I think I will. Let's make it more interactive. Okay, no, no, no. Sanskar Jha, raise the hand. Anything you want to add, Sanskar? Okay. Adil won't be good at case study, benefit at finding internship. Yes, yes, yes. That's one way to finding an internship. Yes, definitely, and one way to find a lucrative job opportunity, which I will be adding here. Okay, guys. Okay, so I think most of my audience have are looking for internship. I have not done an internship till now. So I will just, before discussing on how to find an internship and what to look for an internship, I'll just focus on why should even why internship. Okay, so why of things is really important. If I'm saying that I have to do an internship, uh, 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 what's the purpose behind it? Okay, so in my opinion, there are three most important reasons behind doing an internship, and the biggest reason is internships is one of the best route to find a job that suits you. Okay, so just imagine, like, you're finding a job through a interview route. Okay, you apply for an interview, apply for a job through, let's say, your campus placements or Naukri or IM jobs, through any job platform, and you sit for an interview, and the interview comes and takes a 30 minutes of interview, and you're in the job. Okay, let's say you get fortunately you get recruited for the job, and after that 30 minutes of interview, let's say there are 3-4 rounds, and then you are doing the job. Okay, so usme the point being is just the basis on that 30 minutes or 1 hour, you are what all judgments you have to do. Okay, आपको जज करना है कि क्या वो मैनेजर मेरे लिए फिट है, क्या वो जॉब मेरे लिए फिट है, क्या वो वर्क कल्चर मेरे लिए फिट है, और क्या वो जेडी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है हर जॉब का, वो मेरे लिए फिट है कि नहीं है. एंड आफ्टर दैट, in that just 1 hour, all those things you have to figure out for yourself. So don't you think it's very difficult कि 1 घंटे में यार ये सब मैं कैसे जज करूं, और उसके बाद उसके बेसिस पे आपने जॉब ज्वाइन कर ली, and then suddenly after 1 week you realize, yeah, this is not what I signed up for, or after 1 month you realize this is not what I signed up for. Maybe the JD was very different from the job that you're doing. B,
the work culture, you didn't like the work culture. C, you didn't like your manager. So when you looking for a job through interview, taking a lot of there are a lot of unknowns that it will be very difficult to find out through just one interview or maybe going through Glassdoor and all those things. But for internship, if you do an internship for let's say a 2 months or a 3 months period in a company, you would find out the kind of job, the kind of work environment, first of all, the culture, the work culture, uh, what kind of timings are there in the office. You'll find out what kind of people are there, what kind of work is it the work is it okay okay okay. So what kind of what kind of jobs are there, what kind of other opportunities could be there in the company which you are looking for. So the doing a 2 months or 3 months internship is the best way to reduce the unknowns of your work culture, of your okay, of your company work culture, of your uh, job involvement, of your job description. So all those things you will be trying to reduce a lot of unknowns if you do a 2 or 3 months of internship after before joining a job. Okay. And you would be hearing a lot of things that don't be choosy for finding a job. So I will be a bit contrarian here. I would tell you that be very choosy while finding a job. Okay. So, and don't be choosy while doing an internship, because why should you be choosy? So, see, the thing is, you're not coming in, everyone has their different way of working, everyone has their different uh, upbringings, everyone have their different interests. तो मे बी कुछ चीज अगर मेरे को अच्छी लगती है वो आपको अच्छी ना लगे, या फिर किसी थर्ड पर्सन को अच्छी ना लगे, मे बी वो मिक्स ना बैठे. So, secondly, when I'm coming to a job, I'm not coming कि यार मैं सिर्फ 5 साल के काम करके निकल जाऊंगा. Most of us will be in the job ecosystem for next 30 years. So it will be really helpful to figure out कि what kind of job really suits me. So ये अगर स्टार्टिंग के 2-3 साल में अगर आप टाइम लेते हो समझने के लिए कि दिस इज द काइंड ऑफ जॉब दैट आई वांट टू डू, it really helps. It really, trust me guys, really helps, because this is something in which you will be giving at least 10 to 12 hours on a daily basis. Your job will be almost 50% of your time. So something which you are doing 50% of time, you should be really conscious of what you are doing and with whom you are doing. So in my opinion, 2-3 internship कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. Take your time, take 2 months, 6 months. You have a good 4 years bracket where you can experiment with various internships while working, while you are studying. Maybe work across various sectors, work in IT sector, work in ops-based company, work in SaaS-based company. Try to figure out, yeah, this is something which suitable for me. And the best way to do is through internships. So that is the one of the biggest advantage of doing internship. Okay. And guys, let's be honest with yourself. Let's be choosy in what kind of first job, what kind of job you'll be doing, where you'll be spending almost 50% of your time in a day. Second most important benefit would be why of an internship is फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडस्ट्री. यार देखो, हम लोग जब किताबी नॉलेज लेते हैं, हम लोग बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग कोई भी बेसिक टॉपिक पढ़ते हैं ऑन एंटरप्रेन्योरशिप और एनीथिंग रिलेटेड टू business studies, or let's say very fundamental investment strategies. So that is something which adds very little value to your learning, because you don't know how will those concepts turn out when without actually applying them. Let's say अगर मैं कोई अच्छा concept पढ़ रहा हूँ about let's say reward and recognition,
until or unless I see actually how that reward and recognition is playing out or executed in a practical scenario, and what kind of long-term effects or short-term effects it will have on that employee morale, it will be just a tool, that good to know thing. Okay, so for us, getting real hand experience is really really important. So I still remember when I did my first internship. It was a 6 month internship in Pune. Before that, I remember that a lot of things about, those were the first time when I figured a lot of things about a corporate work culture. Those were the times when I figured a lot about how it was an engineering based internship. So how critical is the R&D part of things, and a lot of things uh, for which we might be taking granted when we are studying those things in books are really might be really important or really critical for that particular company or industry. सो बेसिकली बहुत सारी चीजें अगर आप पता चलती है पहली बार जब आप किसी इन्वायरमेंट में जाके वर्क कंपनी में जाके इंटर्नशिप करते हो. ओके, तो दैट्स द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री दैट यू गेट, एंड दैट कुड बी एनी इंडस्ट्री. लेट्स से वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री की बात करूं, फैशन डिजाइनिंग. मतलब अगर मैं को ये नहीं पता कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, आई कैन स्क्रॉल थ्रू any trends or anything, but jab tak if I am not working with a proper a person or a manager who has seen those trends for a, let's say, 5 years 10 years period, I will not be able to have build a type of understanding until unless I am shadowing or working along with someone. So first hand experience is the most valuable part of an internship. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यार देखो, हम लोग सब अभी रेज्यूमे बनाएंगे अपने, है ना, जॉब ढूंढने के लिए. तो एक इंटर्नशिप पे जो आपने काम किया है विल बी योर बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंटर्स while giving an interview. Okay, so if I will tell you, let's say you have done a two internship जिसमें आपने वेरियस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो एज एन इंटरव्यूअर आई विल कीप माय पर्सनल एक्सपीरियंस. मोस्ट ऑफ माय questions would be around that project or that internship only. Or it is because, why will ask, why would I do that, is because that's the first practical experience that you had. उसके पहले के मैंने आपके मार्क्स देख लिए, ग्रेड्स देख लिए, ठीक है, but marks and grades are not a good indicator of how a person would perform, or not the best only indicators of how a person would perform in an industry, although a very important indicator. But as a manager I am looking कि यार ये क्या बंदा मेरे काम मेरे जो ongoing projects है उसमें value add कर पाएगा नहीं कर पाएगा. So for me, talking a lot about the pointers, the projects that the person has done on a particular internship is really really important. So and for you guys also, like it's a no, हम जब रेज्यूमे बिल्ड करते हैं हमारा ये रहता है कि मैं रेज्यूमे डालूं क्या. कुछ लोगों के ने मतलब इट्स ओके, लाइक इट्स अ फेयर प्रॉब्लम टू हैव, क्योंकि अभी आपने यू आर स्टार्टिंग योर करियर, ऑब्वियसली लॉट ऑफ पॉइंट्स होंगे नहीं आपके रेज्यूमे में डालने के लिए, है ना. तो when you have like one or two intern, और ज्यादा इंटर्नशिप मत कर लेना, like 1 2 max 3, and out of that at least एक या दो ऐसी इंटर्नशिप होनी चाहिए जिसमें like you have really added good value, really good projects that you have done. तो it's a sure shot when you are having those 1 or 2 internships pointers on your resume, it's a sure shot way to redirect your interview towards those resume pointers. So when we are going in an interview, हमेशा हमें डाउट रहता है यार क्या पूछ लेगा मेरे से, ठीक है, मैं क्या प्रिपेयर कर लूं. हम लंबे लंबे आंसर्स प्रिपेयर करते हैं, पता नहीं ऑल काइंड ऑफ रिसर्च करते हैं लिंक्डइन पे, नौकरी पे, आई डोंट नो, लाइक ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज to just to figure out ki what kind of questions can be asked in an internship interview and what answer would I give. वो prediction करना might be really difficult if you don't have the resume pointers. But if you have those resume pointers about your internship, it's, I am 100% telling you 50% of your interview will revolve around the projects that you've done in internship. Okay,
So one internship is a one of the easy way. आइदर उस इंटर्नशिप के थ्रू आपकी जॉब लग जाएगी, और वहां पे इंटर्नशिप में आपने अच्छा काम किया होगा जिसके थ्रू आप कहीं और जॉब लगा लोगे. तो one line answer for internship, why internship is find a good job. That's it. Okay. So now that we have covered the part of why offer the internship, now let's move on to how to find an internship. Okay. So one of the best mediums or one of the best source to find an internship job is through LinkedIn. तो guys, अभी मैं एक क्विक क्वेश्चन और पूछूंगा. कितने लोगों का how many people are having a active LinkedIn account or a LinkedIn account? Okay. Adit, Nancy, Saksham, any questions? Me. Okay. Fast. Okay. Great. Okay, great. So a lot of people also raised hands. Nancy, do you want to add anything in? No, sir. I basically wanted to tell that I also have an active LinkedIn account. Great. So me. Okay. So most of you are having an active LinkedIn account. So that's the now the times are changing, guys. Like people are moving what you say away from a far formal resume or one page resume. They want everyone wants a profile. Okay. जैसे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल होती है, फेसबुक की प्रोफाइल होती है, वैसे आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है. लिंक्डइन की प्रोफाइल में क्या है कि आपने क्या काम किया है, आपने क्या एजुकेशन किया है, किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, एंड अ बिट अबाउट योरसेल्फ. ओके. सो जब आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हो, इट्स योर प्रोफेशनल आइडेंटिटी for a job market or for any kind of networking that you want to do. Okay. So जब हम LinkedIn पे एक्टिव रहते हैं तो हमें कंटिन्यूसली बहुत सारी नॉट जस्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बट जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है. तो आई विल गिव यू माय एग्जांपल or our company's example. In a span of 4 years at Pristine Care, I have hired at almost more than 50 plus interns for various roles across sales, ops, marketing, and also for field sales, and not just in Gurgaon, but in various cities like Pune, Bangalore, and some other tertiary cities also, and Chennai also. 90% जो मैंने हायरिंग की है इंटर्नशिप की इज थ्रू लिंक्डइन. Guys, again, I will repeat it. 90% of hiring that I have done for interns is through LinkedIn. Because as a manager, what I want कि interns की hiring के लिए ना मैं अपने HR को तंग नहीं करूंगा, मैं खुद से hiring कर लूंगा, है ना? So try to understand. और companies as a manager, as a leader, कंपनीज ऐसे लीडर को प्रमोट करती हैं जो अपनी हायरिंग खुद कर सके. गेटिंग माय पॉइंट? जो who have a good funnel of people who are ready to join them on a project. So for me it is really important that I am able to do hiring based on my own capabilities, especially when I'm hiring interns. तो अगर मेरे को इंटर्नशिप के लिए हायरिंग करनी है तो मैं दो चीजें करता हूँ. एक तो लिंक्डइन पे हर महीने वी गेट अ फ्री जॉब पोस्ट, एंड वो जैसे ही फ्री जॉब पोस्ट में डालता हूँ, इजिली आई कैन गेट अराउंड 50 to 60 resumes easily, and then I can just message them and take a quick interview and then hire people. Secondly, if I don't have a job post, second thing I can do is put a normal post. Okay, so in LinkedIn it gives anyone can put a normal post at any time, no limit on that. But for job post, if you don't have a premium account, then you can put one job post in a month. So every month I'm just waiting कि यार कब मेरा ये month खत्म होगा, मैं एक job post create करूंगा
and both for hiring interns and full-time employees. So if you are active on LinkedIn, you can find a lot of job posts like from the people like me who are really doing a lot of hiring from LinkedIn. So guys, stay active on LinkedIn. Problem Instagram. So one the Anshu is asking you not much, especially in next 1 week or 10 days, especially for the internship. Uh, for me that 2 months of internship is like an interview. Okay, अगर वो 2 month की internship अच्छे से कर ली, it for me it's ज्यादा कुछ नहीं देखता देवांशु, just that वो बंदा join, that person is ready to join us or not, nothing much. Okay. And one quick question: how many of you spend more time on LinkedIn as compared to the time you spend on Instagram? Yeah. Yes, Saksham. Internship is basically a 2 month long interview. So Kanishka, you have to stay active. As I'm telling you, managers like me would be putting a lot of job posts on LinkedIn. You have to stay active and you have to find these jobs on LinkedIn. You'll find a lot of job posts on LinkedIn. Okay. So today, let's take a pledge that we will be spending more time on LinkedIn rather than other social media platforms. Okay. How do managers to find managers who put rather than finding managers who put job posts, find job posts and then find job posts on LinkedIn and आपको अपना पता चल जाएगा किस मैनेजर ने डाला है. So on LinkedIn you have to just stay active. आपके feed में आ जाएगा jobs, or you can go at LinkedIn jobs and look for job opportunities also. At what period of time we should start finding internship on LinkedIn? Guys, for you as a college, मैंने जैसे आपसे बात करी कि you have to really experiment. You have to really, let's say you have a 3-year course or 4-year course, you have to do at least one internship each year. So so that the purpose of internship is to find a good job and while being choosy. तो एटलीस्ट 3 इंटर्नशिप तो करनी है, तो हर साल maybe from the first year onwards you should start looking for an internship. So Rakhi, I hope that answers your question about the timing of internship. Yes, sir. Okay, so few other points of if we don't want to apply for companies like Big Four, should we present ourselves? Yeah, a lot of Big Four people are on LinkedIn. Like, if you have this kind of doubt, just go and search for people from Big Four companies like KPMG or any other big consulting firm like McKinsey or BCG. Every one of them is on LinkedIn. And yes, these people also hire from LinkedIn these days. Okay. So apart from LinkedIn, I'll just give you other ideas also. Secondly, you should have a strong resume. That's a no-brainer. Next thing is networking, cold mails and messages. Okay. So basically, when you are working
when you are having a particular experience, आपको ये पता चलता है कि इस kind of industry या इस kind of company में मैं काम करना चाहता हूँ. No harm in finding the profile. Let's say मेरे को Netflix के प्रोडक्ट टीम में जाना है, तो मैं लिंक्डइन पे जाके सर्च करूंगा कि नेटफ्लिक्स के प्रोडक्ट टीम में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं. और मैं देयर आर वेज और प्लेटफॉर्म्स टूल्स फिर विच अगर आपको उस लिंक्डइन प्रोफाइल मिल गई तो उस लिंक्डइन प्रोफाइल से आप उस पर्टिकुलर पर्सन का मेल आईडी निकाल सकते हो. And then you could start cold mailing them. Very, very short cold mails. Like you will find a lot of, you could use ChatGPT to write cold mails to make it more effective and ask for internship. But sir, ma'am, I really liked your profile. I would like to work for, I'm seeking an opportunity to work with you for 2 months. Very short mail, make it a bit personal about that particular person. Trust me. हम लोग करते नहीं हैं out of fear, but one of the best ways to find jobs and also internships. और कुछ नहीं है तो LinkedIn पे उन्हें मैसेज कर दो, कनेक्ट शेयर करो एंड मैसेज कर दो. सेकंड थिंग इज सपोर्ट सिस्टम. तो अगेन मैं अगर किसी को हायर करता हूँ एज अ फ्रॉम LinkedIn और थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स, तो अगर दैट पर्टिकुलर पर्सन टर्न्स आउट टू बी गुड, आई टेल हिम और हर दैट यार तेरे कोई दोस्त यार है जो तेरे जैसे मेहनती है या तेरे जैसे हसलर है, उनको भी लिया. तो फॉर मी इट्स नॉट अबाउट हायरिंग वन पर्सन एंड अदर पर्सन. मैंने अगर एक बंदे को हायर कर लिया, फॉर आफ्टर दैट आई आस्क दैट पर्सन कि आपके पीयर ग्रुप में जो जो अच्छे अच्छे बंदे हैं, बिकॉज दैट पर्सन वुड बी नोइंग अदर पर्सन मच बेटर देन आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. वो उनको बुला लो, ठीक है. आप पे काम करेंगे एंड देन वी विल फिगर आउट इन 2 months कि आगे कंटिन्यू करने का नहीं करना. तो सपोर्ट सिस्टम और फ्रेंड रेफरल सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखो. लॉट ऑफ हायरिंग वी डू इज थ्रू रेफरल्स आल्सो. ओके right. One, for instance, I did an internship and a content writer at one place, but I also नैन्सी फिगर आउट करो. आपने 2 इंटर्नशिप कर ली कंटेंट राइटिंग में और मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, ठीक है. तो आपको अब ये फिगर आउट करना है, रेदर देन यू आस्किंग द ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर सामने वाला बंदा मेरे प्रोफाइल को वैल्यू करेगा कि नहीं करेगा. द गुड क्वेश्चन, द बेटर क्वेश्चन फॉर यू शुड बी इज after doing the first internship in content writing, whether that is my cup of tea or not. Okay. And whether that if content writing is something that you want to do, then find your job in content writing. B, अगर आपको content writing पसंद नहीं आया और आप finance में जाना चाहते हो, no issues with that. For me as a person, I will see that this person is trying to experiment. This is a good time to experiment. And if I am taking your interview, I can't answer for someone else. If I am taking your interview, I would appreciate 2 different profiles. And that could be really different profiles, like not from one in engineering and one in marketing and one in, let's say, HR. I'm okay with that. As a manager, I will be okay if that kind of a resume comes across my table, because I would know that person is experimenting with what they want to do. Okay, must be suitable for those who go to banking line after graduation. So banking again is a very, very something which I would want to tell you that the jobs, 80% of jobs that come in banking, let's say if I particularly talk about in our college, people like colleges like ICICI Bank and Kotak would come for hiring. Most 80% of the job files would be on fin sales, like selling a financial product. Okay. So be really careful that do you want to go into a banking job
in a sales or marketing profile, or do you want to look for a finance profile in a banking job? So just assuming that, and to especially answer your question, what kind of internship, it really depends. Banking line has all kind of profiles. It has a profile in marketing, it has a profile in finance, it has a profile in HR. Okay, so we have a very big misconception कि banking profile होगी तो मतलब फाइनेंस का ही काम होगा. ऐसा नहीं होता है. बैंकिंग प्रोफाइल 80% सेल्स के रोल के लिए हायर करती है. And what we call that is as a BFSI sales roles. Okay, that sales roles could be like various roles like selling credit cards, being a relationship manager. So be really careful कि कैसी प्रोफाइल है. So अगर आपको लेट्स से फाइनेंस की प्रोफाइल में जाना है बैंकिंग के अंदर, तो you should look for a finance profile while doing an internship, and that finance profile could be depending upon again various subsectors होते हैं. तो वैसी इंटर्नशिप आप देख सकते हो. अगर आप उसको सेल्स की प्रोफाइल में जाना है तो लॉट ऑफ पीपल आर ऑफरिंग BFSI सेल्स इंटर्नशिप्स. मोस्टली वो सेल्स इंटर्नशिप कैसी होती है कि मार्केट रिसर्च बेस्ड होती है या फील्ड बेस्ड होती है. यू कैन डू अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप ऑन दैट. ओके, सो क्विकली और कंप्लीट करेंगे. Then there are like various platforms like Internshala and everything. Okay, you can go through that also. Okay, so 143. This is my part on internship. Quickly थोड़ा सा ना हम लोग केस स्टडी के बारे में बात करेंगे. तो केस स्टडीज क्या होते हैं गाइस, है ना. तो and then we'll come back to internship like 7 मिनट में ना like till 150 कवर करते हैं, and then I will answer your questions also. Okay, तो केस स्टडीज क्या होते हैं? बेसिकली कॉर्पोरेट केस स्टडीज होते हैं, जैसे HUL लाइम हो गया, एशियन पेंट्स कैंपस हो गया, then Pepsi and lot of ICICI Bank or lot of big corporates make their case studies. ठीक है, तो उसके through what we can do is one of the biggest why of solving a case study is one of the best route to understand real-time business problems. जब बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी केस स्टडी बनाती हैं, तो what they try to do is they give you a real-time problem to you, real-time project to you. Okay, so that is something like they are putting you in your in the seat of a manager or a CEO in some cases कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. जैसे एक बहुत ही अच्छी केस स्टडी आई थी रिसेंटली, मैंने सॉल्व कर दी. रेवोलूट करके एक फिनटेक कंपनी है बाहर की, तो उन्होंने अपना पूरा डेटा स्ट्रक्चर दे दिया था हमको, एंड दैट डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, तो उसमें कुछ डेटा ऑब्वियसली उन्होंने रिडैक्ट कर दिया था. बट द थिंग वाज कि व्हेन आई एम सॉल्विंग दैट केस स्टडी, सो आई एम सिटिंग इन द शूज ऑफ दैट मैनेजर who actually solved that case problem when he was faced with that particular challenge. So that's the first thing. Second is, यार देखो, हमें क्या है, हमको हर कोई बोलता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है, एनालिसिस स्किल डेवलप करनी है. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ना जाते हैं कोर्सेरा में, और कोर्सेरा पे जाके वी स्टार्ट सर्चिंग फॉर कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा एनालिसिस स्किल्स वाले कोर्सेज कर लेता हूं मैं. That is good, but again, that is a bookish knowledge that you will acquire. Why don't solving case studies one of the best ways to develop your critical mindset? Critical mindset or growth mindset जिसे कहते हैं ना, which like are the biggest building blocks of growth and simulation for your brains. That can be done through solving case studies. और solution, कुछ लोग आपसे पीपीटी बनवाएंगे, तो कुछ लोग आपसे रिपोर्ट बनवाते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स भी डेवलप हो रही है उसके थ्रू. ठीक है. थर्ड इज फाइंडिंग लुक्रेटिव जॉब्स. ओके, तो अब जब मैं
मैं जब MBA कर रहा था तो बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी होती थी जो मेरे कॉलेज में नहीं आती थी, है ना, बिकॉज एवरीवन हैज देयर पॉलिसी, बट केस स्टडी कंपटीशन ओपन करती थी और उस केस स्टडी ऑफ कंपटीशन के थ्रू दे वुड डू देयर हायरिंग. तो फॉर मी इट वाज अ बिग लीप कि ऑल्दो द कंपनी इज नॉट कमिंग फॉर डायरेक्ट हायरिंग, बट मैं केस स्टडी कंपटीशन के थ्रू जा सकता हूं and I can get a job which an IMA or B graduate would get at similar salary package if I'm able to solve that case study, if I'm able to win that case study competition. Although very very difficult step, बहुत सारे layers होते हैं, but एक it's like a one क्या कहते हैं wild card entry, even though that particular company or that particular profile might not be coming in your colleges. Okay, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि प्लेबुक क्या है. ठीक है, तो प्लेबुक क्या है कि एक ना एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो 3 एलिमेंट होते हैं एक केस स्टडी के. पहला क्या होता है, दैट कंपनी वुड बी गिविंग यू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के आपको ना एक the big insight or the big idea निकालना है कि वो that could be a needle mover for that particular company and for that particular project. Then उसके बाद then you have to put that idea on a final piece of presentation, and that presentation have to be like really structured and really clear. Okay, तो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में लेके आया था which I can will share the PPT and then you can see that also. तो स्टेप्स क्या है बिग आइडिया निकालने के. ठीक है, पहले तो थोड़ा बहुत सेकेंडरी रिसर्च कर लो बेसिक्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में. लेट्स से FMCG इंडस्ट्री है तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या मार्केट साइजिंग है, एंड ऑल दोस थिंग्स. सेकंड, let's say I have to do my case study involves around basic FMCG items like oatmeals and all those things, and basic breakfast item like there are a lot of breakfast based products in FMCG sector. तो मैं प्राइमरी रिसर्च करूंगा स्टार्टिंग विद द एंड कस्टमर. मे बी द एंड कस्टमर कुड बी अ रिटेल शॉप ओनर और अ फाइनल कंज्यूमर. ओके, और उसके अराउंड मैं एक एक्शनेबल इंफॉर्मेशन निकालूंगा जो मेरे प्राइमरी रिसर्च मतलब क्या है, आप फील्ड पे गए लोगों से बात कर रहे हो. सेकेंडरी रिसर्च मतलब क्या है, आप गए गूगल पे गए हो, चैट जीपीटी पे गए हो, वो सेकेंडरी रिसर्च है, वेरी बेसिक. ठीक है, जब एक्शनेबल इंसाइट आ गए आपके कि प्राइमरी रिसर्च कर लिया, फिर उसके अराउंड एक्शनेबल इंसाइट निकाल लिया आपने. ठीक है, और फिर समझ में सेकंड फोर्थ स्टेप इज कि आपने प्रोडक्ट सर्विस गैप कैसे निकाला और एलिमेंट इंडस्ट्री एनालिसिस किया. ठीक है, बेसिकली आपको पता चला कि यार ये कंपनी ने एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट छोड़ रखा है जिसपे एक अच्छा ग्रोथ आ सकती है इफ दैट पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट कैन बी केटर्ड थ्रू अ प्रोडक्ट. ओके, एंड देन टीजी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है गाइस, बिकॉज सबसे फर्स्ट स्टेप तो टीजी होता है ना. तो थिंग इज टीजी इज अ टारगेट ग्रुप कि किसको एड्रेस कर रहे हो. तो इफ आई एम सेइंग कि आई एम एड्रेसिंग 25 to 35 एज ग्रुप with an income bracket of let's say 30k to 60k, and so for a mobile device, then my answer could not be an iPhone. Okay, because if a person is earning in 20s or 25, a person is earning let's say 10k 15k 20k 30k a month, and a married person, like not a dependent guy, then particular person would be buying a phone like Android phone in the range of 25k to 30k rather than buying a iPhone. So TG build करना बहुत जरूरी है. और फाइनली द बिग आइडिया, द मोस्ट इंपैक्टफुल सॉल्यूशन. मतलब बिग आइडिया क्या होता है कि अगर आपने मेरे पास कोई बिग आइडिया प्रेजेंट किया तो वो कंपनी सोचती है यार ये जिस चीज के बारे में तक मैंने सोचा क्यों नहीं था, ये तो मैं नेक्स्ट मीटिंग में जाके प्रेजेंट कर देता हूँ. एज अदरवाइज मैं कुछ ऐसा आइडिया दूं जो एक एआई करके एक ऐप ऐसी बनाते हैं जिससे LLM लगेगा, बड़ी बड़ी चीजें. मतलब पीपल यूजुअली डोंट वांट दैट. पीपल वांट समथिंग
which is a big insight for them. Okay, तो ये है कि कैसे स्ट्रक्चर करना है एक पीपीटी को, एक केस स्टडी को। तो और वेरियस प्लेटफॉर्म्स है जहां पे केस स्टडी कंपटीशन देख सकते हो। पहले डे टू कम्पीट के नाम से था, अब अनस्टॉप हो गया है, बहुत सही सही केस स्टडीज आती है वहां पे। सेकंड, कॉलेजेस अपनी केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स करवाता है ड्यूरिंग फेस्ट्स एंड ड्यूरिंग देयर टेक्निकल फेस्ट्स एंड ड्यूरिंग देयर वेरियस कल्चर फेस्ट्स, तो वहां पे जा सकते हो, स्पेशली इन एमबीए कॉलेजेस। IIM जॉब से बहुत अच्छी आती है। देयर इज अ गुड वेबसाइट कॉल्ड माइंडसुमो। माइंडसुमो एक बेसिकली केस स्टडी प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑल ओवर ग्लोबल कंपनीज आके अपनी प्रॉब्लम स्टडीज डालते हैं। यू कैन सर्च फॉर माइंडसुमो ऑन गूगल एंड बहुत सारे केस स्टडीज उस पे एक्टिव होते हैं। तो पीपल लाइक एडिडास, नाइकी, गूगल and smaller companies also put their case studies challenges on Mindsumo. वहां पे जाके आप solve कर सकते हो। Anyone can go and solve. उसमें there's no restrictions. So and these are some of the case studies that I have built. तो वो देख सकते हो। I'm sharing the profile. मैं एक HUL line की case study example डाला था, which you can look it for on yourself. तो basically हमारा market survey किया हमने पूरा, उसके अराउंड हमने गैप एनालिसिस किया, फिर बिग आइडिया क्या निकला उसके बाद। ठीक है, तो बिग आइडिया के बाद देन वो हमने बिग किस टाइप के आफ्टर द बिग आइडिया जब हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर दिया तो उसके डिटेल में जाना, क्या प्राइसिंग होगी, क्या मार्केटिंग मिक्स रखूंगा, क्या वेरिएंट्स होंगे उसके, और उसको मैं कैसे प्रमोट करूंगा, मेरे कैंपेन्स क्या होंगे, मेरे फाइनेंशियल प्लान क्या होगा। तो ये थोड़ा बहुत समझो। I will be trying to send this PPT across most of you guys. So it's a glimpse into कि how a case study solutions are given. Okay, और this is somewhat I will try to understand. ठीक है guys, तो अब questions लेते हैं। ठीक है, एक एक करके start करते हैं। I had one question, for instance. बैंकिंग हो गया। आदित्य जिंदल सर, सर्टेन इंटर्नशिप रिक्वायर्स अस टू बी प्रोफिशिएंट इन सर्टेन स्किल्स लाइक एक्सेल। हाँ, एक्सेल सीखना बहुत जरूरी है गाइस, बिना एक्सेल के इंटर्नशिप में मत जाना। अगर कोई मेरे साथ इंटर्नशिप करने की सोच रहा है तो प्लीज एक्सेल और गूगल शीट सीख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू शुड लर्न। कोर्सेज यूट्यूब पे, कोई हाई फाई कोर्स मत करो, यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप जाके सीख लो। मैंने खुद गूगल कर करके, चैट जीपीटी कर करके एक्सेल सीखा था जब मैंने खुद से सीखा था। और आई स्टिल रिमेम्बर, हमारे टाइम में तो इतना हाई फाई यूट्यूब होता भी नहीं था, तो मैं तो गूगल पे आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के ही एक्सेल सीखा था। अदरवाइज यू कैन गो फॉर, इफ यू वांट अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज ऑन बेसिक एंड एडवांस स्किल्स ऑन Udemy। 400-500 रुपए के कोर्स है, 1000 रुपए तक के कोर्सेज होते हैं। यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ कोर्स ऑन Udemy, बट अगेन दिस इज वन पॉइंट आई मिस्ड which I should have told you. Thank you Adit for reminding me. गूगल शीट एंड एक्सेल बोथ, कुछ कंपनी गूगल शीट यूज करती है, जैसे हम लोग गूगल शीट यूज करते हैं बिकॉज फ्री होता है। स्टार्टअप जनरली गूगल शीट यूज करते हैं। ये दोनों को अच्छे से समझ लो, बहुत हेल्प करेगा। ओके, Aniket, I want to be in the food industry, so what kind of profile should I make, or what I can learn to be in the food industry? ठीक है, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में although I don't have any direct experience in the food industry, see guys, मतलब earlier also I got a question कि बैंकिंग लाइन में जाना है तो कैसी इंटर्नशिप प्रोफाइल होनी चाहिए। तो see, अगर rather than saying कि मेरे को फूड इंडस्ट्री में जाना है तो मेरी प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए, फर्स्ट फिगर आउट कि किस टाइप इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के अंदर ना हर टाइप की प्रोफाइल होती है। ओके, फूड इंडस्ट्री हो चाहे बैंकिंग हो, वहां पे आपको फाइनेंस का बंदा मिलेगा। वहां पे जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया, बैंकिंग के अंदर 80% ऑफ जॉब्स आर सेल्स एंड मार्केटिंग। आप ये बोलोगे कि यार फाइनेंस, तो मैं एक्सपेक्ट करके आया था कि फाइनेंस का बंदा जाएगा, बट दैट्स द थिंग। rather than going for industry, focus on industry, focus on the profile that you want to do, and then maybe you can choose an industry depending upon your interests. Okay, so as
my good answer to you, Aniket, will be first figure out what kind of profile you want to enter into, and then figure out the industry. Okay. Certain industries require us to be proficient in such skills. Okay, I think I have answered that question. But so let's open up, guys. Like let's any other question regarding internships or case studies that you have. Let's take a few more questions. Which domains most marketing and sales. जनरल प्रोफाइल इंटर्नशिप की क्या रहती है कि कोई बड़ी कंपनी लेट्स से एफएमसीजी हो गई, तो 60% प्रोफाइल ऐसी होती है कि आपको मार्केटिंग रिसर्च के लिए हायर करेंगे. फील्ड पे जाओगे, आप उनके कंज्यूमर से बात करोगे, कुछ फॉर्म्स भरोगे, कुछ साइट्स लेके आओगे. एनी कंपनी, एचयूएल ले लो, पिडालाइट ले लो, देन मैरिको ले लो. They used to come to our colleges, and then most of the people you would hire would go to a tier 2 or tier 3 town research-based projects, and that would be like marketing is the biggest source. Sales and marketing specifically, I would say, not just marketing, is the biggest hire for interns in India. Yes, anything else? Okay. Kanishka is asking, many of us do professional courses, so how to choose which profile suits you the best? Yeah, are Udemy certificate accepted? Yes. See, it's not about being see, Udemy, don't do a course just for the again, very cliche statement, but don't do a course just for a certificate. Let's say a Udemy course is being accepted in the industry, but आपने वो कोर्स सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कर लिया और आपको उसकी नॉलेज नहीं है और आपने उसमें रिज्यूमे में डाल दिया, और हम a manager like me who really pokey during interview session ask you a question relevant to that certificate and you are not able to answer, then that candidate is becoming a big no-no for me. तो कुछ कोर्सेस यूडेमी पे ऐसे होते हैं जिसपे which are like joint courses, जिसपे कोई बड़ा कंपनी या बड़ा इंस्टीट्यूट का नाम जुड़ा होता है, तो obviously that would be more acceptable. NPTEL courses, again, very good source of good source of learning, especially अगर आपको बहुत science and engineering around courses कर रहे हैं, NPTEL is a very good source. What's a good platform for personal growth? Startup or big companies? Good platform for personal growth. Okay. अगर if I'm सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो नैन्सी's बुक्स, नॉर्मल एनालॉग बुक्स. तो books can't be a better platform for बुक्स. एक बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है? क्योंकि कोई अगर पर्सन बुक्स लिखता है तो फिर दे पुट अ लॉट ऑफ देयर लाइफ, कंप्लीट लाइफ लर्निंग इन दैट बुक. इफ आई वुड हैव एन अपॉर्चुनिटी, आई वुड शो माय बुक शेल्फ. मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, मैं बहुत सारा पॉडकास्ट सुनता हूँ, मैंने बहुत सारे कोर्सेरा यूडेमी के कोर्सेज भी किए हैं, बट फॉर मी टिल नाउ द बिगेस्ट लर्निंग्स एंड बिगेस्ट नीडल मूवर इन पर्सनल ग्रोथ हैज बीन थ्रू बुक्स. And then my practical experience, obviously, but then book reading as a habit, please guys, develop karo. That is one of the needle mover for you. Courses यार, Udemy पे कोई भी कोर्स कर लो अनिकेत. मैंने कोई कोर्स नहीं किया था तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा. मैं आपको एक तरीका बताऊं एक्सेल और गूगल शीट लर्न करने का. मैंने कैसे सीखा था? I didn't start from कि ये कोर्स मैं करूंगा. I started with the project. मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी, उन्होंने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया था जिसमें मेरे को रिगरसली एक्सेल यूज करना था. तो
और मेरे को ये समझ में आ रहा था कि मैं कॉपी पेन में लिखते रहता था कि ये 10 काम, ये 10 टाइप के रिपोर्ट्स मेरे को एक्सेल पे बनाने हैं। तो जब ये 10 रिपोर्ट में बना रहा हूँ तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आई विल फेस इन एक्सेल। तो जैसे प्रॉब्लम आती थी मैं गूगल में जाके सर्च करता था। जैसे बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है कि अगर मेरे को कंडीशनल सम लगाना है, करेक्ट, तो मेरे को मैंने सर्च किया हाउ टू डू कंडीशनल सम इन एक्सेल, ठीक है। तो वो पोस्ट आ जाते हैं कि सम इफ करके एक फॉर्मूला होता है, आप कॉलम्स पे सम इफ लगाओ, ये सिंटैक्स है, यूज करो, एंड देन दैट्स हाउ आई लर्नड एक्सेल एंड गूगल शीट। मैंने पहली बार जब सीखा, जब मैं प्रिस्टीन में आया, तो अगेन थोड़ा बहुत एक्सेल का नॉलेज था, तो गूगल शीट थोड़ा इजी हो गया। तो उसमें जैसे अगर मेरे को अक्रॉस शीट कुछ मूव करना है तो एक इंपोर्ट रेंज का फॉर्मूला होता है, तो वो नहीं पता था, which was very specific to Google Sheet and query. So that again I learned through googling and asking on internet. ठीक है, how to get funding for startup ideas. Hardik, no clue about that. Sorry. Okay. So for funding, Hardik, for good startup ideas, is again for me a topic which I'm not a bit more aware about, because मतलब कभी मैंने खुद फंडिंग उठाई नहीं है, तो sorry, I'm not capable to answer that question for you. Okay, guys, anything else? Anything? Let's just write it on the chat box. I will be able to answer any questions that you might have. Okay. Okay, guys, I think that's all from my side. I think we had a good session. I think you guys have raised a lot of good questions. From my side, I've tried to answer them to the best of my knowledge. And maybe, again, these things are very subjective. And I have tried to share the information that have worked for me. And that might not work for someone else, surely, but I have tried to keep it as fundamental as possible and share you the most objective knowledge from my side. But again, anything that you want to understand more and know anything else that you want to know, these are my so this is my contact details, this is my number, and I will just put in your chat box. So get in touch with me anytime you want. This is my contact number. Drop me a WhatsApp, connect me on LinkedIn. This is my mail ID. akash.tripathi@pristinecare.com. Any doubts regarding how to find an internship, how to find a job, any personal growth level issues, any you want to learn new things, you want to learn new tools, you want any basic struggle you are having in life, contact me. Okay, and this is my number, 8433-694898, 8433-694898. Contact me on WhatsApp also, so I will be available for you. I would prefer someone dropping a message on WhatsApp rather than directly calling. I don't pick up unknown calls, sorry for that. So drop me a message, give a brief intro, I will reply for sure. Okay, anything else, guys? If not, then thanks a lot. We had a great session. Thank you, sir. Thank you for taking out the time to share your expertise with us today. And to the wonderful audience, thank you for your participation. It was indeed a valuable session, and I'm sure we've all learned something today. Thank you. And with that, we've come to the end of the session. Thanks a lot, guys. Thank you, sir.